Hey guys, Arnav here from Coding Blocks. First of all, Happy New Year, and I hope that the first few days of 2019 has been going really great for you. We published a few videos on Google Summer of Code and how you can prepare for that. और सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा सवाल वो ये था कि अगर हम मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हैं तो व्हाट इज़ इट दैट वी शुड डू बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू देर इज़ नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व्स जावा देन these days most of the people are developing Android apps using Kotlin और उसके बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि रिएक्ट नेटिव भी तो आजकल इतने जगह यूज़ हो रहा है एंड देन ऑफ कोर्स गूगल हैज़ रिसेंटली लॉन्च फ्लटर सो व्हाट are we supposed to do? Should we do native development with Kotlin or Java? Should we do React Native? Should we do Nativescript? Should we do Flutter? Or should we build web apps using Ionic and put them inside Android? A lot of questions, so we will cover all of them. What are these different platforms, how they work, and which is the one that you should be learning. Okay. Okay, तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है एप्स व्हेन वी आर यूजिंग एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स. तो अगर हम नेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, नेटिव डेवलपमेंट अगर हम एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी इन जावा बिकॉज एंड्रॉयड का जो फ्रेमवर्क लेयर है बेसिकली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कर्नल है वो तो लिनक्स की कर्नल यूज़ होती है. But on top of that, the framework basically all the UI that you are seeing, even the OS one, like the settings app, the telephone app, or the notification drawer, the software buttons that you have, the keyboard, everything. तो जो यूज़र इंटरफेस वाला लेयर है वो एंड्रॉयड का खुद का भी जावा में लिखा हुआ है. एंड्रॉयड रन्स ऑन अ रन टाइम विच इज़ अ जावा बेस्ड रन टाइम. इट्स कॉल्ड एंड्रॉयड रन टाइम. पहले उसका नाम डालविक हुआ करता था. इट्स बेस्ड ऑन द जावा रन टाइम एनवायरमेंट JRE टाइप. सो traditionally like it's been at Java, and Kotlin is a language which can be compiled down to Java. तो मतलब बेसिकली जावा की बाइट कोड होती है जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पे चलता है. कॉटलिन भी सेम बाइट कोड पे कंपाइल हो सकता है. तो कॉटलिन में ऐप्स लिखना, जावा में ऐप्स लिखना सिमिलर थिंग है, ओनली थिंग द सिंटैक्स इज डिफरेंट. कॉटलिन इज easier to use and the syntax is much more nicer looking. You can achieve a lot more things with less code. ठीक है, but that aside, Java writing apps in Java, writing apps in Kotlin, pretty much the same thing. It's a strictly object-oriented language. You have to understand how classes, objects, and all of that stuff works. Okay, and if you have like a good background with something like C++ or C Sharp, Objective C, it might feel familiar. A lot of people already have a good background with Java. For them, it would be easy. Similarly, अगर हम iOS डेवलपमेंट की बात करें, नेटिव iOS डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, मेकिंग एप्स फॉर iOS द वे एप्पल recommends you to build. So in that case, you have to build apps traditionally in Objective-C, but just like Android, Java, and Kotlin exist. So in iOS world also, Apple had started working on Swift, which is a language that कैन इंटरऑपरेट विद ऑब्जेक्टिव सी. तो आपका आधा कोड ऑब्जेक्टिव सी में, आधा कोड स्विफ्ट में ऐसा लिखा हुआ हो सकता है. स्विफ्ट वाला कोड ऑब्जेक्टिव सी के साथ इंटरफेस कर सकता है क्योंकि बाइनरी लेवल पे दोनों सेम टाइप के नेटिव इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो यू कैन राइट योर iOS एप्स इन ऑब्जेक्टिव सी और इन स्विफ्ट. दो आजकल लोग हमेशा स्विफ्ट में ही लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव सी में कम लिखते हैं. So that's what your options are in native development. The biggest drawback with native development is that you have to develop your iOS app and your Android app separately. Okay, so that is what brings us to the other cross-platform frameworks, and there are a bunch of them, and they all try to tackle the problem in very very different ways. Okay, तो सबसे पहले कुछ एक फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो उतना ज़्यादा पॉपुलर आज और नहीं रहा है बट पहले काफ़ी यूज़ होता था, जो कि Xamarin है. ZAMARIN, Xamarin. इट वॉज अ सेपरेट कंपनी वंस अपॉन अ टाइम. अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया है. और Xamarin में हम ऐप्स को C शार्प में लिखते हैं. ऑल दो ऐप की जो UI वाली लेयर है, हाउ द एप्स गोना लुक लाइक द लेआउट्स, वो हमें iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए अलग अलग डिज़ाइन करने पड़ते हैं. बट जो हमारा बिजनेस लॉजिक है कि बेसिकली से अगर आप एक ऐप बना रहे हो रिमाइंडर सेट करने की, तो ऐप की एक लेआउट पार्ट होगी. देयर वुड बी अनदर पार्ट वेयर द रिमाइंडर्स आर सेव्ड इन अ डेटाबेस. रिमाइंडर्स आर फेच्ड फ्रॉम द डेटाबेस. जिस टाइम पे रिमाइंडर ट्रिगर होना है उस टाइम पे रिमाइंडर ट्रिगर होगा. इसे बिजनेस लॉजिक कहते हैं. और जो बिजनेस लॉजिक वाला पार्ट है वो हम C शार्प में लिखते हैं और वो कॉमन कोड होता है. हम एंड्रॉयड का और सी iOS का कोड हम सेम लिख सकते हैं क्योंकि C शार्प वाला कोड जो है वो कंपाइल होता है और वो नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता है.
which directly runs on the CPU basically. Okay, so there is no involvement of Java or involvement of Objective C here, क्योंकि हम सीधा compile native code में कर रहे होते हैं उसको, ठीक है. So that's one approach, but it's not very popular because it was hard to keep up to date with the changes in the iOS operating system and the Android operating system. So Xamarin kind of, washed away. Okay. So one of the reasons why these क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट, जैसे अभी ज़मारिन की बात कर रहे थे, वो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिससे हम एप्स बना सकें जो जितना ज़्यादा हो सके कॉमन कोड लिख के हम सेम ऐप को एंड्रॉयड पे और आईओएस पे दोनों पे रन कर सकें, ठीक है. बिकॉज फॉर स्मॉल स्टार्टअप्स और स्मॉल टीम्स यूजुअली एक सेपरेट एंड्रॉयड डेवलपमेंट की टीम मेंटेन करना, साथ ही साथ एक आईओएस डेवलपमेंट की टीम मेंटेन करना is problematic, and whether or not I mean this is something that people might agree or disagree on, but business के एंगल से देखा जाए, एंड मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ कंपनीज की एक्सपीरियंस मैंने देखी है, वो भी ये रहती है कि इट्स यूजुअली हार्डर फॉर पीपल टू गेट ट्रेंड ऑन नेटिव डेवलपमेंट, especially iOS development. And then it's hard to find people who are experienced in Android and in iOS, and well experienced, not just कि यार hello world वाली app बनानी आती है, you're looking for say something like say Flipkart, so they need to make an app which has a lot of things. यहाँ पे मतलब चीज़ें ऑर्डर हो रही है, चैट हो रहा है वेंडर और कस्टमर के बीच में, कार्ट पे चीज़ें डल रही हैं, पेमेंट गेटवे ऐप, सो एंड सो थिंग्स. सो यू नीड पीपल विद गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस डीलिंग विद दैट ऐप बीइंग यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, fixing bugs for that. So it's not something like किसी को एंड्रॉयड या iOS डेवलपमेंट 2 महीना करना आता है उससे हम ये ऐप बनवा सकते हैं. So you need people with good experience and on both platforms to be able to maintain these things. And then if you want to like add any new feature on any of these apps, you have to do that simultaneously on both, क्योंकि आप जाके टीवी पे ऐड चला रहे हो कि हमारे ऐप के अंदर ये नया फीचर है, और फिर लोग कह रहे हैं यार एंड्रॉयड वाले ऐप में तो है, iOS वाली ऐप में नहीं है, ऐसे कैसे. तो of course that's not possible. So you have to like, because from the business perspective, from product perspective, Flipkart makes a mobile app, they don't make Android apps and iOS apps. It just happens to be कि आज के डेट में मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड और iOS है, कल को अगर कोई और मोबाइल प्लेटफॉर्म है तो उनको उसके लिए भी बनाना पड़ेगा. What they want is that लोगों के मोबाइल पे ऐप हो और उस ऐप में वही फीचर्स हो. They don't care कि एंड्रॉयड है या iOS है. तो दैट हैज़ ऑब्वियसली लेड टू द राइज ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है रिएक्ट नेटिव, और जो थोड़ा कम पॉपुलर है बट काफ़ी सिमिलर है वो है नेटिव स्क्रिप्ट. इसके पीछे जो फिलोसॉफी है वो बड़ी सिंपल है. टेक ए प्लेटफॉर्म विच इज़ ऑलरेडी वेरी पॉपुलर एंड अडेप्टेड टू मोबाइल नीड्स, ठीक है. तो ऑफकोर्स मतलब मोबाइल के लिए अडेप्टेबल प्लेटफॉर्म जो ज़्यादा पॉपुलर है, देर आर ओनली 2 प्लेटफॉर्म्स दैट वी कैन थिंक ऑफ विच आर सिमिलर टू हाउ मोबाइल ऐप्स वर्क. एक होते हैं डेस्कटॉप ऐप्स, दूसरे वेब ऐप्स, ठीक है. तो डेस्कटॉप ऐप्स का तो ज़माना चलो गुजर ही गया है. आई मीन एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट या एडोबी, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एडोब क्रिएटिव क्लाउड वगैरह बना रहे हैं, इसके अलावा किसी को और डेस्कटॉप ऐप्स बनाने की मतलब नए डेस्कटॉप ऐप्स कौन, या आप कोई नए डेस्कटॉप ऐप यूज़ करते हो? लोग पबजी भी मोबाइल पे खेलते हैं, गेम डेस्कटॉप वाले से ज़्यादा लोग मोबाइल पे खेलते हैं. तो डेस्कटॉप का बीता ज़माना हो गया, ठीक है. So the other thing that is closest to a UI development like mobile is web. So let's take the web platform adapted to mobile. And अगर हम web की platform ले भी रहे हैं तो उसमें मतलब web is a very wide platform. There are so many things. There are so many frameworks. React है, Angular है, Vue है, Ember है, ये वो, ठीक है. So let's pick a way which is very commonly used and try to make mobile apps using the same mechanism, ठीक है. तो ये फिलोसॉफी लेके फेसबुक ने अपनी रिएक्ट फ्रेमवर्क को मोबाइल के लिए अडॉप्ट किया और उसका नाम रिएक्ट नेटिव रखा. दे मेड इट फर्स्ट फॉर iOS विच दे वांटेड टू यूज फॉर इंस्टाग्राम. नाउ इट इज अवेलेबल फॉर बोथ iOS and Android, and a lot of apps use that. There is another company called Telerik, तो वो भी डेवलपर टूल्स बनाती है, and they did the exact same thing but they did it with Angular instead of React. So they started building Nativescript. इंटरनली थोड़ी बहुत अप्रोचेस में डिफरेंस है. अभी हम इस वीडियो में उतनी ज़्यादा डिटेल्स में उसमें नहीं घुस रहे हैं, ब्रिजेस वगैरह कैसे क्रिएट होती है रिएक्ट में और नेटिवस्क्रिप्ट में क्या होता है. बट हाँ, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट नेटिव एंड नेटिवस्क्रिप्ट इज कि नेटिवस्क्रिप्ट के अंदर जो यूआई लेयर है, जो लेआउट है, हम एक ही लेआउट बना के iOS और एंड्रॉयड दोनों में एग्जैक्ट सेम स्क्रीन्स पा सकते हैं. रिएक्ट नेटिव ऐसा नहीं है. रिएक्ट नेटिव में जो यूआई वाला पार्ट है वो हमें अलग अलग बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे विजेट्स हैं, जैसे लिस्ट व्यू है,
तो iOS की लिस्ट व्यू और एंड्रॉइड की लिस्ट व्यू रिएक्ट नेटिव के अंदर सेम ऑब्जेक्ट से नहीं बनती, अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनती है। तो अगेन थोड़ी सी Xamarin जैसी सिचुएशन है यहाँ पे कि आप 70-80% कोड शेयर कर पाते हो, बट आप 99% 90% कोड शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि आपका यूआई वाला कोड रिएक्ट के लिए, एंगुलर के लिए, एंड्रॉइड के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। बट आपकी बिजनेस लॉजिक आप फिर भी सेम रख सकते हो। ये दोनों के दोनों फ्रेमवर्क जो है ऑफ कोर्स बिल्कुल उसी तरह से कोड लिखी जाती है जैसे वेब के लिए आप रिएक्ट के लिए लिखते हो या वेब में आप एंगुलर के लिए लिखते हो। बाय द वे, रिसेंट अपडेट लास्ट ईयर 2018 में ही नेटिव स्क्रिप्ट हैज स्टार्टेड सपोर्टिंग व्यू जेएस ऑल्सो। तो अगर आप व्यू या एंगुलर ज्यादा प्रेफर करते हो एज अ वेब डेवलपर, यू वांट टू गो इनटू मोबाइल, आई थिंक नेटिव स्क्रिप्ट इज अ गुड ऑप्शन। अगर आप रिएक्ट प्रेफर करते हो, रिएक्ट में आपने अपना या रिएक्ट यू आर कंफर्टेबल विद, यू वांट टू मेक मोबाइल एप्स, रिएक्ट नेटिव इज अ बेटर ऑप्शन। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज रिएक्ट नेटिव होता है। रिएक्ट नेटिव के कंपैरिजन में नेटिव स्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी शायद 1/10 टाइप की होगी। नेटिव स्क्रिप्ट काफी पॉपुलर है, ऐसा नहीं है कि पॉपुलर नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ एप्स मेड विद नेटिव स्क्रिप्ट, बट रिएक्ट नेटिव जिस लेवल पे पॉपुलैरिटी है उस लेवल की नहीं है। मैंने पर्सनली अभी लास्ट ईयर ही नेटिव स्क्रिप्ट के ऊपर काफ़ी काम किया। नेटिव स्क्रिप्ट व्यू वाला जो प्रोजेक्ट है जो कि नेटिव स्क्रिप्ट के साथ व्यू को बाइंड करता है, आई हैव मेड सम कॉन्ट्रीब्यूशंस टू दैट। इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। आई फील दैट दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स डू हैव लॉट ऑफ प्रॉमिस, बट इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। द प्राइमरी लिमिटेशन इज कि दीज फोकस अ लॉट ऑन दी हाउ द यूआई लुक्स लाइक ऑफ द ऐप, ठीक है। तो जब भी आप नॉन यूआई पार्ट्स की बात करते हो, लाइक कोई बैकग्राउंड सर्विस चल रहा होगा, फाइलें डाउनलोड हो रही होगी, पुश नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, इस टाइप की चीज़ों की जैसे ही हम बात करने लग जाते हैं, इमीडिएटली दिस ब्यूटिफुल ड्रीम ऑफ सिंगल कोड बेस फॉर एंड्रॉयड एंड iOS, नॉट हैविंग टू अंडरस्टैंड Kotlin, नॉट हैविंग टू अंडरस्टैंड स्विफ्ट, ये जो सपने हैं ये बिखरने लग जाते हैं, which is the reality as of now today if you are making an app using React Native or Nativescript. As soon as you go beyond the UI layer, as soon as you look at background services or polling data from the server, और लोकेशन सर्विसेज, फ़ोन की जीपीएस से लोकेशन पिकअप करना, इस तरह की चीज़ों को डिबग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप कोई ऐप कैमरा वाली ऐप बनाना चाहते हो, उसमें फिल्टर्स वगैरह होते हैं, इस टाइप की ऐप बनाने जाते हैं इमीडिएटली, लाइक इंस्टाग्राम की ऐप की एग्जांपल लेते हैं। इंस्टाग्राम की ऐप पूरी की पूरी रिएक्ट नेटिव में बनी हुई है, बट द पार्ट वेयर द फोटोज आर टेकन एंड फिल्टर्स आर अप्लाइड, दैट पार्ट इज नॉट इन रिएक्ट नेटिव. That part has native bridges created because it's very hard to do those kind of things which is non-UI related, because the functionality of how the camera works in iOS is very different from how the camera works in Android. The functionality of how to pick up the location is very different in how do you do it in Android, how do you do it in iOS, ठीक है। तो मोबाइल ऐप्स जब हम बनाते हैं तो हमारे जनरली दो तरह के ऐप्स होते हैं। एक वो ऐप्स हैं जो कि किसी एपीआई से डेटा को फेच करा के सिंपली आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जैसे कोरा की ऐप है, मीडियम की ऐप है, इस तरह के जो ऐप्स हैं, these apps are 100% suited to be used with React Native और Nativescript, बिकॉज आप सेम कोड यूज करके आप दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए बना सकते हो। आपकी इतनी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है कि डिवाइस स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऐसे कई ऐप्स होते हैं जो मान लेते हैं पिक रॉ फोटो शूट करके उसके ऊपर कोई इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, या AR या VR रिलेटेड ऐप्स हैं, ठीक है, या फिर कोई सिक्योरिटी पर्पज से बनी हुई ऐप्स है कि आपकी मोबाइल चोरी हो गई तो आप SMS करके फ़ोन को लॉक कर दो। सिस्टम, एंड्रॉयड सिस्टम इंटरनल्स, iOS सिस्टम इंटरनल्स को यूज़ करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म्स रिएक्ट नेटिव या नेटिव स्क्रिप्ट टाइप के प्लेटफॉर्म्स उतने ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ठीक है। बट the best part about both of these things is that you can mix and match. You can write part of your app in the native way, part of it you can write it using Swift for iOS, Kotlin for Android, so and so, and the rest part of the app, which is the UI part, which the user will interact with, that part you can write with Nativescript or React Native and so on. ओके सो फाइनली जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो गोइंग इनटू 2019 right now, probably the most hyped, the most talked about mobile framework right now. And why not? Because it's made by Google, it's Flutter. So सबसे पहली बात तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें, the language that Flutter uses is Dart. Now Dart is like, unlike JavaScript, it's not a very widely used language. Unlike languages like Objective-C or Java, it's not a language that has been traditionally used a lot in mobile development in iOS or Android or something like that. So why Dart? I think बिकॉज एक तो डार्ट गूगल ने बनाया लैंग्वेज, और दूसरी बात ये भी है कि जो डार्ट लैंग्वेज है वो काफ़ी मिडिल ग्राउंड है जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच का। तो
जो जावा में टाइप सेफ्टी वगैरह टाइप के हमें फीचर्स मिलते हैं, और क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम पे हम काफ़ी एरर्स चेक कर पाते हैं, वो चीज़ें भी है। और सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट के साथ काफ़ी सिमिलर भी है। कहीं पे आपको कोई ऑब्जेक्ट बिना डेटा टाइप के बनानी हो तो वो भी पॉसिबल है डार्ट में। And Google had been trying to make Dart a very popular language for some time. They had even tried to make a web browser called Dartium based on the Chromium, which is like the Chrome browser. और वो चाहते थे कि लोग वेबसाइट्स की वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड में डार्ट यूज़ करें जावास्क्रिप्ट की जगह। ये कोशिश काफ़ी हद तक नाकाम रही थी गूगल की। दे वर नॉट एबल टू गेट पीपल टू स्विच टू डार्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, बट गूगल हैज़ बीन कंटिन्यूइंग टू वर्क ऑन डार्ट। एंड uh, one of the other reasons why Flutter Google is pushing a lot is because Google is also building an operating system called Fuchsia, Fuchsia, Fuchsia. It's basically it's the name of a color. It's a pink kind of color. So Google is making an operating system by that name. Now I don't want to divert from this topic right now, but yeah, a lot of people do ask about Fuchsia. So I'd like to say that don't worry that एंड्रॉयड हट जाएगा और फुशिया सब लोग यूज़ कर रहे होंगे, मेरी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की स्किल्स कहाँ यूज़ होगी। नॉट लाइक दैट. सो फुशिया, आई थिंक it's not yet ready for production. It's not going to be ready to be actually put into mobile phones for selling retail mobile phones, at least for, I don't know, like at least for the next 2 to 3 years. That's the least. And also when it is going to be released, so Google has already, like a few weeks ago, I was just looking at the Fuchsia source code, and they have just added the support for running Android apps as it is into Fuchsia. They've added the Android runtime onto it. तो जब Fuchsia even launch होगा तो तब भी उसके अंदर Android के apps रन हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि Fuchsia is what to like change everything. तो जो ये फुशिया ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए जो उसका कर्नल है, आई थिंक गूगल हैज रिटन दैट फ्रॉम स्क्रैच. इट्स नॉट द लिनक्स कर्नल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके लिए जो एप्स बनते हैं, द यूआई लेयर ऑफ फुशिया, दैट हैज़ टू बी रिटन इन फ्लटर. तो गूगल wants to be able to, of course, get all the mobile developers that exist and get them ready for building apps for Fuchsia. So if people get accustomed to building apps with Flutter from today, then of course people would be ready to build apps for Fuchsia जब Fuchsia launch होगा मार्केट में और काफ़ी फोन्स में अवेलेबल होगा. बट एनी वे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट व्हाट माइट और माइट नॉट हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि हमें पता नहीं है Fuchsia कभी लॉन्च होगा भी नहीं होगा, तो पॉपुलर होगा कि नहीं. बट एनी वे, आज के डेट पे हम फ्लटर को यूज़ करके एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ऐप्स बना सकते हैं. और जिस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी हाइप हो रही है फ्लटर के अराउंड, is because it takes a very different approach from React Native, Nativescript, Xamarin kind of frameworks. Now, what happens is that there exists a family of cross-platform frameworks apart from the app building ones already. तो अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोगों को कि गेम्स बनाने के लिए लोग यूनिटी 3D फ्रेमवर्क या फिर अनरियल इंजन टाइप के फ्रेमवर्क्स हैं उनको यूज़ करते हैं. And those frameworks are basically game development frameworks. They are not used for making apps, but they are cross-platform. You can make an app using Unity, which will work on Android and iOS, and even on desktop. It will work on Windows, Mac OS, etc. Also, it works everywhere. तो इनमें क्या होता है कि इनकी अप्रोच काफ़ी डिफरेंट होती है. ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ग्राफिक्स लेयर है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स ड्रॉ होती है, वो उस ग्राफिक्स लेयर का एक्सेस ले लेते हैं और स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे पिक्सल्स वो जनरेट करते हैं. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम समथिंग लाइक रिएक्ट नेटिव और नेटिवस्क्रिप्ट, बिकॉज ये जो फ्रेमवर्क्स है वो क्या करते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड है या iOS है, तो उसके इंटरनल मैकेनिज्म है व्यूज़ को क्रिएट करने का, बटन्स क्रिएट करना, टेक्स्ट क्रिएट करना, लिस्ट क्रिएट करना. ठीक है, तो उसी को यूज़ करते हैं. तो जब आप रिएक्ट नेटिव यूज़ करके एक एंड्रॉयड या iOS ऐप बनाते हो, तो उसका जो बटन है वो iOS में iOS की तरह दिखता है, एंड्रॉयड में एंड्रॉयड की तरह दिखता है. और जब हम बटन को क्लिक करते हैं तो उससे जो फंक्शनैलिटी ट्रिगर होती है, तो तब एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जाकर चलता है जिसको हमने डिफाइन किया हुआ होता है. बट द यूआई इज रेंडर्ड द वे द ऑपरेटिंग सिस्टम iOS और एंड्रॉयड रिस्पेक्टिवली सपोज टू रेंडर इट. ओके, बट व्हाट फ्लटर डज इज फ्लटर टेक्स द अप्रोच ऑफ अ गेम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क. और वो लोग क्या करते हैं कि एंड्रॉयड के या iOS के डिफ़ॉल्ट जो तरीके होते हैं ऐप
की यूआई को रेंडर करने का, उसको बाईपास करता है और वो सीधा का सीधा ग्राफिक्स लेयर का एक्सेस लेता है और स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ होने वाली फुल स्क्रीन एक्सेस लेके स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ होने वाली सारी पिक्सल्स को फ्लटर ही जनरेट करता है. Now, this approach, of course, has its pros and cons. Now, I think the biggest con is that, biggest pro and biggest con both is that the app looks exactly same on both operating systems. Now, something that you can achieve with React Native or Nativescript is that you can make your app feel like an iOS app because it has iOS kind of UI on iOS, and it feels like an Android app because it has Android-like UI on an Android phone. But when you make it with Flutter, it is going to have that same material design UI on both iOS and Android. Now, some purists in the iOS world, they feel that material design type app बिल्कुल एंड्रॉयड टाइप दिखने वाली एप्स iOS में बनानी चाहिए, हमें iOS के लिए iOS स्पेसिफिक UI बनानी चाहिए. So if on Flutter you want your app to look like iOS on iOS and Android on Android, then you will have to like design the UI twice, but you can design it once and it will look exactly the same on both places. One advantage additionally is that in future, if like how the default UI in Android or in iOS it changes, your app will still continue to work and look the exactly same way if you're making it with Flutter. But the problem with Flutter as of today, like going into 2019 right now, is this that अगर हम Flutter में projects बनाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जब एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि रेट्रोफिट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज जो कि इंटरनेट से डेटा फेच करने के लिए काम आती है, जीसॉन काइंड ऑफ लाइब्रेरीज जो कि जेसॉन डेटा को जावा में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है, या फिर ओ आर एम्स एग्जिस्ट करते हैं iOS में एंड्रॉयड में दोनों में, जो कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनको वो SQLite डेटाबेसेस में स्टोर कर देते हैं. इस टाइप की चीज़ें फ्लटर में आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो वर्क इज बिंग डन ऑन दैट, बट आज के डेट में पॉसिबल नहीं है बिकॉज फ्लटर डज नॉट सपोर्ट रन टाइम रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन फाइंड आउट द डेटा फील्ड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट at the runtime. Flutter does not support that. So because as a result of that, you can't have serializing libraries like JSON and you can't have ORM libraries right now for Flutter. It's not available. Also because like the Flutter ecosystem is very new, so you don't get a library for everything and anything that you want. Like if you are making like iOS apps with Swift or Android apps with Java, Kotlin, etc., there's a library for everything. Like तुम्हें कोई सर्कुलर इमेज भी चाहिए उसकी लाइब्रेरी अवेलेबल है, तुम्हें कोई IMDb की डेटाबेस एक्सेस करनी है उसके लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है, आपसे सीधा रेस्ट API कॉल्स भी नहीं करने पड़ेंगे, मतलब एवरीथिंग हैज लाइब्रेरी. रिएक्ट नेटिव लास्ट 2-3 साल में काफ़ी पॉपुलर हुआ है. देर आर वेरी बिग कंपनीज हु आर यूजिंग दैट. आई मीन इन इंडिया इटसेल्फ मिंत्रा इज यूजिंग, फ्लिपकार्ट इज यूजिंग, आई थिंक आई नो लाइक Zomato had been trying out a bit, and like lot of big companies are using React Native, which means that there is a good ecosystem of libraries available for that as well. Compared to that, Flutter का 1.0 वर्जन अभी जस्ट एक महीने पहले रिलीज हुआ है, एंड इट्स नॉट लाइक नॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन लेवल एप्स ऑन गूगल प्ले स्टोर. मे बी गूगल प्ले स्टोर पे पॉपुलर एप्स की बात कर रहा हूँ जो मतलब 10 मिलियन टाइप डाउनलोड्स हैं, ऐसे एप्स 1 या 2 ही होंगे जो फ्लटर यूज़ करते हैं, 1-2 भी शायद नहीं होंगे. So it means you're not going to get a good ecosystem. अब स्टैक वर्कफ्लो पे जाओगे तो फ्लटर रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, आंसर्स कम मिलेंगे. But it is something that looking into the future, it feels like a better step forward from React Native. Lesser things to debug because आपकी जो फ्लटर की कोड है वो डायरेक्टली नेटिव में रन हो रही होती है. देयर इज़ नो जावास्क्रिप्ट के बीच में कोई ब्रिज बना के दोनों के बीच में serialized data ऐसे पास हो रहा है, and all of that stuff is not there. So you don't have to debug 2 layers of your code, one JavaScript layer then another Java layer of your code you have to debug. वो सब नहीं है, तो it's a more cleaner architecture. And अगर हम एप्स ऐसे बनाना चाहते हैं जहाँ पे हमारा कुछ कोड फ्लटर में हो, बाकी का कोड नेटिव एंड्रॉयड और नेटिव iOS में बना हुआ हो, इस टाइप के एप्स बनाने के लिए फ्लटर इज अ बेटर प्लेटफॉर्म बिकॉज इट हेल्प्स यू इंटीग्रेट your Android native code base and your iOS native code base in a much more easier way than React Native or Nativescript kind of platforms will allow you to do. Okay, so that's about Flutter. And I think if you are trying to learn mobile development right now today, I mean, if I had to suggest something for you, I would say that if you want to be able to build apps for both operating systems, Android, iOS, both right now today, and you want to be able to learn something really quickly and make a small project really fast,
I would definitely suggest Flutter because out of my personal experience, I have tried out all of these things myself, and the easiest learning curve to be able to build an app, like मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना है, मेरे को एक स्टॉप वॉच बनाना है, ठीक है, या मेरे को एक ऐप मूवी रिव्यूज़ की ऐप बनानी है, इस टाइप के ऐप्स पे पहुंचना, जीरो से लेके यहाँ तक पहुंचना, learning Dart, learning Flutter, and getting to that place where you can build that an app, that entire journey is going to be definitely the fastest with Flutter, because if you go to Flutter's website, उनकी वेबसाइट पर टैगलाइन ये लिखी होती है कि build app, I think build apps with great UI in record time, ऐसा कुछ लिखा रहता है. So I think their focus is that you can like make people learn really quick how to build those things. So that's like the 0 to 1 step in Flutter is very fast. But when you have to make really complex apps and it has to do a lot of things, that's when Flutter will constrain you. Right now, today, आज की बात कर रहा हूँ, 2019 January when I'm recording this video, आज की बात कर रहा हूँ. In future it might not be true, but Flutter आज के डेट में आपको कंस्ट्रेन करेगा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाने के लिए, बिकॉज द इकोसिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, द लाइब्रेरीज डोंट एग्जिस्ट, एंड लाइक यू हैव टू सर्च लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन, हैव टू फिगर आउट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन. एंड फ्लटर इज वेरी मच फोकस्ड ऑन द यूआई. बिजनेस लॉजिक वाले पार्ट के अंदर again, like Dart is not a very highly capable language. There aren't a lot of Dart libraries as such. जैसे JavaScript या Java के libraries इतने ज़्यादा मिल जाते हैं, तो Dart के लिए नहीं मिलते. Dart is also a very new language. The platform and the language both are very new. So when you are trying to like build something as complex as मेरे को एक payment gateway बनाना है, PayPal type का, that's when you will start feeling constrained a lot by something like Flutter. But anyway, and if you're trying to like learn mobile development, if you are like interested in making an app like say कैमरा ऐप जो कि फोटो खींचते टाइम कैमरा के ऊपर इफेक्ट्स डाल देता है, इस टाइप के ऐप्स बनानी है जो कि एंड्रॉयड के नेटिव सिस्टम लेवल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेगा, या कोई ऐप है जिसमें आपके एंड्रॉयड के सेंसर्स, एक्सेलरोमीटर, जायरोमीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू गेट यूज्ड अ लॉट. In those cases, I would suggest that you learn how to do native app development. Although that means that if you want to build an app for iOS और आप एक बनाना चाहते हो एंड्रॉयड के लिए, दोनों के लिए बनाना चाहते हो, तो फिर आपको मतलब दोनों अलग अलग सीखने पड़ेंगे. दोनों की लर्निंग कर्व्स अपनी अलग अलग है, काफ़ी टाइम लगेगा. अगर आप वेब डेवलपमेंट आपको ऑलरेडी आता है, इफ़ यू आर रियली कंफर्टेबल विथ ईदर से एंगुलर और रिएक्ट और Vue.js, सम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यू आर रियली कंफर्टेबल विथ, then I would suggest you go for React Native or Nativescript. React Native, if of course React is your thing, because the code is going to look very similar to how you build React apps. Although you have to learn a bit about mobile development, you'll have to learn a bit about how native Java and native Swift development works. ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आप स्किप नहीं कर सकते React Native apps बनाते टाइम पे, बिकॉज ब्रिजेस वगैरह बनानी पड़ती है, ठीक है. और जो जब ऐप क्रैश करता है तो उस लॉग्स को रीड करने के लिए भी आपको एंड्रॉयड iOS का थोड़ा आइडिया चाहिए होता है. ओके, if you are more inclined towards Angular or Vue.js, then I think Nativescript is a better option, because Nativescript के अंदर आप Angular की फ्रेमवर्क या Vue.js की फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप मोबाइल ऐप्स को बना सकते हो. Okay, so that's about these frameworks that exist on the cross-platform side of things. And I think finally one thing I would talk about is of course the hybrid mobile development frameworks like Ionic, PhoneGap, Cordova, all of these. तो इनके बारे में मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा बात करने में, बिकॉज ऑल ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स आर स्लोली गेटिंग फेस्ड आउट बिकॉज ऑफ अ रीजन ऑफ दैट. जो वेब एप्स होते हैं, मतलब प्योरली वेबसाइट के फॉर्म में बने हुए होते हैं, दोज कैन बी टर्न इनटू समथिंग कॉल्ड PWS, प्रोग्रेसिव वेब एप्स. एंड इफ यू आर लाइक अ React, Angular, Vue.js kind of person, you know already what PWAs are like. You probably made some, and you can make a PWA, and then you can like when you open it on your mobile browser, आप add to home screen ऑप्शन होता है, उसमें आप कर सकते हो. फ्लिपकार्ट लाइट की वेबसाइट जैसे अगर आपने देखी होगी कभी, तो वो वेबसाइट अपनी HTML, JavaScript, CSS को ऑफलाइन सेव कर लेता है. तो लेट्स से इफ फ्लिपकार्ट लाइट आपके फ़ोन पे है, तो आपको अपने माई ऑर्डर्स देखने के लिए आपको जो पेज खुलता है, तो माई ऑर्डर्स आपके लोकली सेव्ड रह सकते हैं, बिकॉज अनलेस यू बाय समथिंग न्यू, तो आपके पुराने माई ऑर्डर्स जो है वो लोकली सेव्ड रह सकते हैं. तो इट फील्स अ लॉट लाइक एन ऐप, ऑल्दो वो चल ब्राउजर के थ्रू रहा होता है, ठीक है. इट कैन बी एडेड टू योर होम स्क्रीन, so it completely feels like how you would use a mobile app, so that benefit is going to be there. But I think the thing with like for hybrid apps like PhoneGap, Cordova, Ionic, these are, इनमें क्या होता है कि हम एक वेब ऐप ही बनाते हैं और उसको हम एक APK के फॉर्म में बंडल करते हैं, और जब हम उसको एक APK या
फॉर IPA फॉर iOS ऐप, जब हम बंडल करते हैं तो पूरी की पूरी क्रोम वेब ब्राउजर की एक कॉपी हमारे ऐप के अंदर जाती है, जो हमारे ऐप को काफ़ी बड़ी बना देती है साइज में. सो इट विल बी लाइक अ 50-60 MB ऐप ऑन iOS, 20-30 MB ऐप ऑन एंड्रॉयड. एंड देन उसको खोलने के बाद यूज़र दिखेगा कि इतनी मैं 40 MB की मैंने ऐप डाउनलोड करी और वो इतनी स्लगिश चल रही है, इतनी स्लो चल रही है, बिकॉज आफ्टर ऑल एक ब्राउजर चल रहा है, ब्राउजर के अंदर की कोड चल रही है, तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू दी native app like feeling. It's not as going to be as fast. Okay. So as far as performance and speed is considered, hybrid apps like phone app, Cordova, these things are going to be the slowest form factor, and that's why these are not getting used a lot anymore. लोग PWA बना लेते हैं सिर्फ, और लोग add to home screen की option दे देते हैं. Nativescript or React Native kind of platforms, they are going to be like much faster, very close to native, but फिर भी क्योंकि JavaScript की execution would not be as fast as native code execution on iOS or Java code execution on Android, so it would still be like 20-30% slower than what you can achieve with native Android development, but it's going to be very close. Okay. Flutter right now is very experimental in nature, but performance wise, the speed and all is pretty good. But memory usage on Flutter apps, my personal experience has been that it is very, it takes up a lot of memory. Uh, Overall performance wise, like good speed, less memory usage, everything that is of course possible only with when you're making Android apps with Kotlin, Java, etc., and you're making iOS apps with Objective-C and Swift. It's like pure native development that can give you the kind of performance benefits that nothing else can give you. None of these cross-platform frameworks can give you. So I think all of these have their own strong points and their weak points, and it's up to you to decide and what situation you are in. Do you already have a bit of idea about web development? Are you trying out things fresh? Do you have a bit of idea with Objective-C or Java already? Then maybe that's an advantage for you. Okay, so figure those things out and try to learn something based on these things. Also about your requirements. Do you need to make a cross-platform app, iOS and Android both, or can you like only make an Android app and launch, and that would be good enough for you? Like for example, in India, less than 1% of the phones in India are iOS. So I mean, you might like just be able to launch an Android app and iOS कभी और देख लेंगे, कभी launch करना होगा तो कर लेंगे, kind of thing. A lot of startups do that, right? So you have to put all these things together into perspective when you are deciding exactly like what you should be using to build your mobile apps. So I think hope that helped. You can if you are interested in mobile development with like Android development with Java and Kotlin, you can go on to our website online.codingblocks.com. We have an online course where we teach this. And if you're interested in building apps with Flutter, then we are launching a course on that really soon. So stay tuned on online.codingblocks.com. We have a course on that. You might like that. Otherwise, like we post a lot of videos like this, informative ones, and a lot of ones where we are showing hands-on how to code. So definitely subscribe to our channel. You might find something that interests you. And once again, have a great new year. Thanks.